A very good morning, my dear students. How are you? I hope you all are happy and healthy. Take care of yourself. Take care of your health first because the COVID-19 is spreading very rapidly and fastly. Take care of yourself and using kadhas and using hot water for your health. And keep studying, keep in your home and keep studying. Okay, so we are basically continuing the chapter 4 human development, and in previous video we had completed the infancy. Okay, this is the chapter 4 which is about the developmental period, developmental stages, in which we had completed the concept of development, so many relative terms, maturation, evolution and the growth, and the influences of development, the biological and the cultural. In the cultural influences we discussed the two major approach, the two major models by Durganand Sinha and the Bronf and Brunner's models, contextual view. And we are completing the prenatal period, which is the first period of the development. After that the infancy, that's been the 0 to 2 year period, in which we had already covered the portion of motor development, sensory abilities and the cognitive development. Okay, and the last section, which is the socio-emotional development, this topic is basically remaining, and we are continuing this topic right now. So our next topic is socio-emotional development in the period of infancy. So babies from birth are social creatures, and an infant start preferring familiar faces and respond to parents' presence by cooing and gargling, and they become more mobile by 6 to 8 months of age and start showing preference for their mother's company. ठीक है, जो इन्फेंट्स होते हैं दे आर बायोलॉजिकली अ सोशल बींग्स. ठीक है, वो इंटरैक्ट करते हैं विद द फेमिलियर फेसेस बाय कोइंग और द गैगलिंग. ठीक है, गार्गलिंग के थ्रू वो बेसिकली अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले इंडिविजुअल से. एंड बाय 6 to 8 मंथ वो अच्छे से अपनी प्रेफरेंसेस शो करते हैं. वो अपनी मदर की कंपनी को ज़्यादा अपनी मदर की कंपनी में ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा सेफ़ फील करते हैं. दैट्स वाई वो प्रेफर करते हैं अपने मदर की कंपनी या जो भी उनके लव वन हैं उनकी कंपनी. तो वो शो करते हैं अफेक्शन, लव, attachment, the social relationship, the interactions between the individuals. ठीक है, ये स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द इन्फेंसी. And when threatened by a new phase or when separated from their mother, they basically cry or show distress. ठीक है, जब भी वो अपनी लव वन से सेपरेट होते हैं, जब वो अपनी मदर की कंपनी में नहीं होते हैं, सो दे फील डिसकम्फर्टेबल, इनकम्फर्टेबल एंड दे फील क्राइंग और डिस्ट्रेस. ठीक है, सो ऑन बीइंग reunited with the parents or caregivers, they reciprocate with smiles or hugs. ठीक है, स्माइल्स और हग के बेसिस पे वो अपना बिहेवियर एक्सप्रेस करते हैं. दे क्लोज इमोशनल बॉन्ड ऑफ अफेक्शन दैट डेवलप बिटवीन इन्फेंट्स एंड देयर पेरेंट्स. ठीक है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा और अच्छा सा कनेक्शन होता है अपने पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में, विच इज़ नोन एज द इमोशनल बॉन्ड. ठीक है, दैट्स वाई वो अपनी मदर, अपने पेरेंट्स, अपने केयर गिवर्स की कंपनी में अपने आप को सेफ़, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं. और अदर की कंपनी कोई अनयूजन और क्या कह सकते हैं कि न्यू फेस अगर उनको दिखता है विच इज़ नॉट फेमिलियर फेस, तो वो उससे थोड़ा सा स्कैरी हो जाते हैं, फियरफुल हो जाते हैं. एंड दैट्स वाई वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं उनकी कंपनी में. उनको फियर होता है किसी और जो कि अननोन पर्सन से, अननोन फेसेस से. तो बेसिकली उस टाइम से उनका इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल एक्सप्रेशन, एट द सेम टाइम इमोशनल अटैचमेंट डेवलप होने लगता है. जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द इमोशनल एंड द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट्स. सो इट इज़ कॉल्ड बेसिकली अटैचमेंट ऑफ द पेरेंट्स, अटैचमेंट ऑफ द केयर गिवर्स. जो इन्फेंट होते हैं वो एक अटैचमेंट शो करते हैं अपने केयर गिवर से, अपनी मदर से. सो इन अ क्लासिक स्टडी ऑफ Harlow and Harlow in 1962, baby monkeys were separated from their mothers approximately 8 hours after birth. The baby monkeys were placed in experimental chambers and reared for 6 months by
surrogate or the substitute mothers. So one made of wire and the other of clothes. So half the babies monkeys were fed by the wire mother and half by the cloth mother. So regardless of whether they were fed by the wire or the cloth mother, the baby monkeys show a preferences for the cloth mother and spend a lot more time with her. ठीक है, दिस इज अ स्टडी बाय द हॉर्लो इन 1962, जिसमें देखा गया कि जो बेबीज मंकीज थे, मंकी को कुछ फ्यू मंकीज को सेपरेट कर दिया गया उनके बायोलॉजिकल मदर से, विच इज़ द क्लोथ मदर, और उन्हें सैरोगेट मदर जो थी, जो एक दूसरी मदर्स थी, उनकी कंपनी में रखा गया फ्रॉम द 8 मंथ ऑफ द पीरियड. आफ्टर दैट जब उनको रीजॉइन कराया गया अपने क्लोन मदर से, अपने बायोलॉजिकल मदर से, तो देखा गया उनका जो अटैचमेंट था, उनका जो प्रेफरेंस था, वो अपनी क्लोथ मदर, अपनी जो बायोलॉजिकल मदर है उसके लिए ज़्यादा था. दैट्स मीन बेबी मंकीज़ का ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये प्रूफ करता है कि मदर जो होती है उसका दैट्स नॉट मीन ओनली बिकॉज ऑफ नीड, ओनली बिकॉज ऑफ द हंगर, द स्लीप, और मतलब जो भी आपकी नीड है, बायोलॉजिकल नीड है, सिर्फ उसके लिए वो मदर को प्रेफर नहीं करते. सिर्फ उसके लिए वो मदर और बेबी का जो कनेक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए नहीं होता है, बट देयर इज़ ऑल्सो अ अटैचमेंट, अ अफेक्शन, अ लव, एक वार्मनेस होती है मदर और बेबी के बीच में. दिस इज़ बेसिकली इस स्टडी के बेसिस पे ये हाईलाइटेड हुआ, ये देखा गया. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो मदर होती है, जो बेबीज़ होते हैं, वो अपनी मदर को सिर्फ इसलिए नहीं चाहते हैं कि उनको उनकी भूख प्यास और जो भी उनकी नीड है, उनको स्लिप की नीड है या उनकी जो भी नीड है, उनको उसको फुलफिल किया जाए. वो तो कोई भी कर सकता है, बट स्टिल वो प्रेफर करते हैं अपनी मदर को, क्योंकि मदर के गोदी में वो जितना सिक्योर फील करते हैं अपने आप को, एक अफेक्शन, एक वार्मनेस फील करते हैं, वो किसी और इंडिविजुअल की जो कि गोद में वो नहीं अपने आप को उतना कंफर्टेबल फील करते हैं. ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी. So regardless of whether they were fed by the wire or the cloth mother, the baby monkeys show a preference for the cloth mother and spend a lot more time with her. So this study clearly demonstrate that the providing nourishment or feeding was not crucial for attachment and contact or comfort is attachment and contact, but comfort is important. ठीक है. So you too may have seen young children having a strong attachment to a favorite toy or blanket. So there is nothing unusual in this. So as the children knows that the blanket or the toy is not their mother, yet it provides them comfort. So as children grow and become more sure of themselves, they abandon these objects. ठीक है, तो समटाइम जो भी उनका फेवरेट टॉय होता है, या कोई ब्लैंकेट हो सकता है, कोई पिलो हो सकती है, कोई स्पेसिफिक रूम हो सकता है, एक स्पेसिफिक बेड हो सकता है जहाँ पे वो ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट और वार्म फील करें. सो उससे उनका जो अटैचमेंट होता है वो फ्रॉम दी बर्थ, फ्रॉम दी वेरी अर्ली स्टेज, अर्ली एज ऑफ दी स्टेज, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है. और ये बहुत ही नेचुरल है. देखा जाता है कि बच्चे अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच फील होते हैं और फील करते हैं, और जब वो चीज़ें उनके पास नहीं होती हैं तो वो काफ़ी मतलब डिस्टर्ब से हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है. बेसिकली अपने कंफर्ट जोन में वो रहना पसंद करते हैं, उसके बाहर निकल जाने पे उनका डिस्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है बेसिकली. तो ठीक है, दैट्स मीन सिर्फ नीड फुलफिलिंग, सिर्फ फीडिंग, सिर्फ नरिशमेंट ही इम्पॉर्टेंट थिंग नहीं है, बट द कंफर्ट जोन इज इम्पॉर्टेंट फॉर बेबीज विच डेवलप द अटैचमेंट इन बेबीज. Okay, so human babies also from an attachment with their parents or caregivers who consistently and appropriately reciprocate to their signals of love and affections. So according to Erik Erikson, the first year of life is the key time for the development of attachment. ठीक है, एरिक एरिक्सन, who is a very well known psychologist who gave a psychological social theory. ठीक है, उनकी जो थ्योरी है विच इज़ नोन एज द साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, उसमें उन्होंने 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया है. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल थ्योरी. इन 1968 में इन्होंने ये अपनी थ्योरी प्रपोज की थी. आई विल शेयर अ वीडियो ऑफ द थ्योरी एरिक एरिक्सन. सो उनके अकॉर्डिंग जो उनकी फर्स्ट स्टेज है, देयर आर 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. तो
फर्स्ट स्टेज जो है उनकी, वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट स्टेज होती है वहीं से हमारा अफेक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. सो द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इज़ द की टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट एंड इट रिप्रेजेंट द स्टेज ऑफ डेवलपिंग ट्रस्ट और मिसट्रस्ट. ठीक है, बेसिकली एरिक एरिक्सन ने अपनी 8 स्टेजेस की बेसिस पे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें बताई हैं. ठीक है, जो इंडिविजुअल होता है, जो चाइल्ड होता है, उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव. दे सेलेक्ट आइदर पॉजिटिव और दी नेगेटिव पॉइंट एंड दे डेवलप अकॉर्डिंगली. ठीक है, हर स्टेज में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, कुछ सिलेक्शन होता है. बेसिकली वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, और इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना होता है. उस चाइल्ड सेलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेज, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस एंड देयर प्रेफरेंस, और उसके बेसिस पे ही उसका फिर फर्दर आगे स्टेजेस के डेवलपमेंट डिपेंड करता है उस स्टेज के ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के बेसिस पे. सो फर्स्ट स्टेज इनकी जो है एट दी 1 ईयर ऑफ द एज, वहाँ पे ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, these are the 2 points. Trust is a positive, mistrust is a negative. So trust and mistrust के बेसिस पे उन्हें सेलेक्ट करना होता है. जो भी उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बेसिस पे वो किसी एक चीज़ को लेके आगे कंटिन्यू करते हैं. सो अगर उनका ट्रस्ट डेवलप होता है एट द कंफर्ट जोन, अगर उनको प्रॉपर अटेंशन मिलता है, प्रॉपर वार्मनेस मिलती है, अफेक्शन मिलता है, प्रॉपर केयर मिलती है थ्रू द मदर और थ्रू द अदर फैमिली मेम्बर्स एंड द केयर गिवर्स, तो वो ट्रस्ट डेवलप करते हैं. द वर्ल्ड इज़ अ वेरी ट्रस्टफुल थिंग and the world is a very beautiful and the sweetie thing. but अगर उनको वो warmness, वो affection नहीं मिलता है, basically उनकी जो needs हैं वो fulfill नहीं हो पाती हैं, when the child is crying and nobody can attend the child and nobody can even recognize why the child is crying, तो उस टाइम पे जो है उनको मिसट्रस्ट डेवलप होता है. जब वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं आ पाते हैं, उनको वो अफेक्शन, वो लव नहीं मिल पाता है, जो पेरेंट्स हैं, जो मदर है, वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाती है उसके सिग्नल्स को जो वो कम्युनिकेट करना चाहता है. क्योंकि भाई उस टाइम पे बेबीज़ बोल तो नहीं पाते प्रॉपरली, बट वो सिग्नल्स ज़रूर देते हैं. वो एक एक्सप्रेशन के थ्रू, फीलिंग के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं कि वो क्या चाहते हैं. अगर वो चीज़ें हो पाती हैं तो वो ट्रस्ट डेवलप करते हैं, नहीं हो पाती हैं तो वो मिसट्रस्ट डेवलप करते हैं, और उसी सिनेरियो में फिर उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. उसी टाइम से उनकी नेगेटिव स्टेज स्टार्ट हो जाती है. अगर वो मिसट्रस्ट डेवलप करते हैं कि वर्ल्ड इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल थिंग, वर्ल्ड जो है वो बहुत अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, अगर उसको बिटरी एक्सपीरियंसेस होते हैं तो ओवरऑल वो एक नेगेटिव पर्सनालिटी जनरेट करेगा, नेगेटिव पर्सनालिटी के फॉर्म में डेवलप होगा. एंड लास्ट स्टेज में अडल्टन्स के बाद उसको ये सारी चीज़ें, वो हर चीज़ को नेगेटिव वे में परसीव करेगा बेसिकली. ठीक है, एक नेगेटिव पर्सनालिटी डेवलप होगी, और अगर वो ट्रस्ट डेवलप करेगा तो एक पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलप होगी और वो चीज़ों को पॉजिटिवली लेगा. ठीक है, सो दिस इज दी कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स इन अ एवरी स्टेज ऑफ द एरिक एरिक्सन. So a sense of trust is built on a feeling of physical comfort and which build an expectation of the world as a secure and good place, and an infant sense of trust is developed by responsive and sensitive parenting. If the parents are sensitive, affectionate and accepting, so it provides the infant a strong base to explore the environment, and such infants are likely to develop a secure attachment. And on the other hand, if parents are insensitive and show dissatisfactions and find difficulty with the child, so it can lead to creating feeling of self doubt in the child. Securely attached infant responds positively when pick up and move freely and play, whereas insecurely attached infants for anxious when separated and cry due to fear and get upset. So a close interactive relationship with warm and affectionate adult is a child's first step towards healthy development. ठीक है, so at the age of infancy, the infants need a comfortable physical zone where the individual is developed their attachment, their all the aspects of the future life. ठीक है, so उस टाइम पे अगर उसको एक वार्मनेस एंड इंटरैक्टिव रिलेशनशिप, जो कि बहुत ही गुड रिलेशनशिप होती है, वो अगर वो डेवलप करता है, ट्रस्ट डेवलप करता है वो वर्ड के लिए, सो उस टाइम उसका डेवलपमेंट होता है वो पॉजिटिव साइड में अच्छा होता है. उसको एक ब्यूटीफुल, एक अच्छा सा बेस मिलता है. अदरवाइज़ वो नेगेटिव डायरेक्शन में डेवलप करता है, जो कि बहुत ही
अच्छा नहीं माना जा सकता है आगे के स्टेजेस के लिए. सो दिस इज़ द बेस जहाँ पे एक इंडिविजुअल, एक चाइल्ड अपने आप को फुली डेवलप करता है इन अ हेल्दी वे. So this is all about the infancy period. There are so many motor development, sensory development, cognitive development and the socio-emotional development. ठीक है. In a cognitive development there is a concept of object permanence. ठीक है. We discuss the phrase like out of sight, out of mind. ठीक है. This is according to Piaget's theories of cognitive development. So here I would like to explain the things. There are three theories. First one is Piaget's theories. Piaget explain about the cognitive development in a different stages starting from the infants to the adolescence. ठीक है. हमारे infancy, childhood, later childhood is divided into two parts, the early childhood and the later childhood, then the adolescence. ठीक है. adolescence, after that the adulthood. सो ये जो 3 स्टेजेस हैं हमारी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड अडल्सेंस, इन तीनों स्टेजेस में हमारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं, फर्स्ट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट. ठीक है. देन द मोटर डेवलपमेंट एंड द सेंसरी डेवलपमेंट. ठीक है. सो इनके बेसिस पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे और एरिक एरिक्सन की 2 थ्योरीज हैं जो हमें पढ़ना है इन तीनों स्टेजेस के लिए, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड अडल्सेंस के लिए, तीनों स्टेजेस के लिए हमें उनकी थ्योरी पढ़ना है जीन पियाजे की. आफ्टर दैट द एरिक एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, वो भी हमें पढ़ना है. आफ्टर दैट सोशो इमोशनल डेवलपमेंट के ही सेक्शन में कोलबर्ग की एक थ्योरी है. ठीक है. कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, वो हमें पढ़ना है. तो ये 3 थ्योरी हमें पढ़ना है इन तीनों स्टेजेस के कॉन्टेक्स्ट में. So we are just starting the infancy period, we are completing the infancy period and just starting the childhood period. So before starting the childhood period, I share one theory, the Jean Piaget's theory with you, and after completing the childhood I share 2 other theories with you, so you can comprehend, try to understand the theory, what the theory want to say, and after that you will able to understand the different stages in a perspective of these theories. ठीक है. यू कैन अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट परमानेंस कॉन्सेप्ट इन अ थ्योरी ऑफ द जीन पियाजे. ठीक है. दिस इज द सेंसरी मोटर स्टेज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरीज, एंड द फर्स्ट अफेक्शन स्टेज, द ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट स्टेज अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन. ठीक है. सो यू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द जीन पियाजे थ्योरी. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द चाइल्डहुड. Piaget's theory argues that we have to conquer 4 stages of cognitive development. First, the sensory motor stage. Second, the pre-operational stage. Third, the concrete operational stage. And fourth, the formal operational stage. Only once we have gone through all the stages, at what age can vary, we are able to reach full human intelligence. 1. The sensory motor stage, ages birth to 2. In the sensory motor stage, we develop through experiences and movement our 5 senses. Our brain wants to see, hear, smell, taste and touch as much as possible. First, we start with simple reflexes, and soon after we develop our first habits. From 4 months old, we become aware of things beyond our own body. And then as we get older, we learn to do things intentionally. A key milestone is the development of working memory, or in Piaget terms, our realization of object permanence. Before that, our mum can show and then hide a teddy, and we would think it's gone. After, we understand that objects continue to exist, even when we can't see them. We start becoming curious about everything. We want to smell flowers, taste food, listen to sounds, and talk to strangers. To explore more, we move. We learn to sit, crawl, stand, walk, and even to run. This increased physical mobility consequently leads to increased cognitive development. But we remain egocentric, meaning we can perceive the world only from our own point of view. 2. The pre-operational stage, ages 2 to 7. Our thinking is mainly categorized through symbolic functions and intuitive thoughts. We have lots of fantasies and believe objects are alive.
As we are not able to apply specific cognitive operations, Piaget calls this stage pre-operational. We learn to speak and understand that words, images, and gestures are symbols for something else. When we draw our family, we are not concerned about drawing each person to scale, but rather with their symbolic meanings. We love to play pretend, which allows us to experience something new and learn a lot. At around age 4, most of us become very curious and ask many questions. We want to know everything. We can call it the birth of primitive reasoning. Piaget calls it the intuitive age, because while we realize that we have a vast amount of knowledge, we have no idea how we acquired it. Our thinking in this stage is still pretty egocentric. We think others see the world like we do, and still don't understand that they see it differently. 3. The concrete operational stage, ages 7 to 11. We finally discover logic, and we develop concrete cognitive operations, such as sorting objects in a certain order. One example of this is inductive reasoning, which means that if we see someone eating a cookie, we can draw a conclusion and then make a generalization. And we now get the concept of conservation. We understand that if we pour orange juice from a normal glass to a taller one, the amount stays the same. Our younger sister will pick the taller glass, thinking she gets more. By the same logic, we only now can understand that if 3 plus 5 equals 8, then 8 minus 3 must equal 5. Our brain learns to rearrange our thoughts, to classify and build concrete operational mental structures. For example, we now know that we can reverse an action by doing the opposite. Excited by our new mental abilities, we apply them in conversations, activities, when we learn to write, and in school. As a result, we get to know ourselves better. We begin to understand that our thoughts and feelings are unique and not necessarily those of others. That means that we learn to put ourselves in someone else's shoes. 4. The formal operational stage, age 12 plus. Once we become teenagers, we become formally operational. We now have the ability to think more rationally about abstract concepts and hypothetical events. Our advanced cognitive abilities allow us to understand abstract concepts such as success and failure, love and hate. We form a deeper understanding of our own identity and our morality. We now also think that we understand why people behave the way they behave, and as a result, can become more compassionate. Our brain can now do deductive reasoning, which means we can compare two statements and reach a logical generalization. Our new mental skills allow us to plan our life systematically and prioritize, and we can make assumptions about events that have no necessary relation to reality. We can now also philosophize and just think about thinking itself. Our new sense for our identity now also creates egocentric thoughts, and some start to see an imaginary audience watching them all the time. Piaget believed in lifelong learning, but insisted that the formal operational stage is the final stage of our cognitive development. Jean Piaget's first interests were animals, and he published his first scientific paper on albino sparrows in 1907, when he was just 11 years old. In 1920, he began working with standardized intelligence tests. He realized that younger children consistently make types of mistakes that older children do not. He concluded that they must think differently, and spent the rest of his life studying the intellectual development of children. So this is all about the Piaget's theory of cognitive development. Piaget is a well-known psychologist, basically a constructivism. He believed the individual, the child is
इनबॉर्न टेंडेंसी इज द क्रिएटिविटी, ठीक है. ही कंस्ट्रक्ट देयर ओन वर्ड, ही नॉट अ पैसिव यूजर, ही नॉट just observe and take environmental influences, that take environmental things. He modified and changed the things according to their preferences, according to their intelligence, according to their preferences, according to their personality, ठीक है. This is the known this perspective is known as constructivism, ठीक है. So जिन पियाजे के बेसिकली 3 चिल्ड्रंस थे, आई थिंक 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मतलब उन्होंने अपने ही बेबीज़ को ऑब्जर्व किया था थ्रू द पीरियड ऑफ द लाइफ लॉन्ग 14 to 15 ईयर तक उन्होंने अपने ही 3 चिल्ड्रंस को ऑब्ज़र्व किया, और थ्रू द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए उन पे, और उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की. दिस इज़ वेरी यूज़फुल थ्योरी फॉर एकेडमिक पर्पस, दिस इज़ वेरी यूज़फुल थ्योरी फॉर डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, ठीक है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से जो इंडिविजुअल सोचता है उसमें किस तरह से चेंजेस हैं, ये बहुत अच्छे से जिन पियाजे ने बताया था. द बेसिक एक आइडिया जो उन्होंने दिया था वो ये दिया था कि जो अडल्ट की थिंकिंग एंड चाइल्ड की थिंकिंग में अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं होता. ऐसा नहीं है कि बच्चे कम सोचते हैं और बड़े ज़्यादा सोचते हैं, बट द ही और शी वे ऑफ थिंकिंग वो चेंज होता है. वो जिस एंगल से, जिस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, वो अडल्ट का पॉइंट ऑफ व्यू, अडल्ट का एंगल डिफरेंट होता है, और एक चाइल्ड का एंगल जो होता है वो डिफरेंट होता है. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी थ्योरी में. फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट परमानेंस, देन द ईगो सेंटरिज्म, रिवर्सिबिलिटी, देन द 3 एंगल्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. ये सारी चीज़ें आप चाइल्डहुड के भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पढ़ोगे. बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं. एनिमिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, जो चाइल्डहुड में जो चिल्ड्रंस होते हैं वो बिलीव करते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलाइव हैं. दैट्स वाई आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो इवन टेबल, चेयर, फ्लोर, किसी भी चीज़ से कम्युनिकेट करते हैं, किसी भी चीज़ को वो फील करते हैं कि वो अलाइव है, उससे चोट लगेगी, उसको भी दर्द होगा, ठीक है. तो ये चीज़ें दिस इज़ नोन एज द एनिमिज्म, जहाँ हर ऑब्जेक्ट, इवन दिस इज़ द रिमोट भी वो उनके लिए अलाइव है, इसको भी रोना आता है, इसको भी दर्द होगा, इसको भी पेन होगा. ये थॉट होता है चिल्ड्रंस का. एंड द ईगो सेंटरिज्म वो हर चीज़ अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, और वो जो जिस चीज़ को चाह रहे हैं बस वो अपने तक ही, अपने दायरे तक सीमित रहते हैं. सॉरी, अदर इंडिविजुअल्स का पर्सपेक्टिव वो नहीं समझ पाते. उनके लिए जो चीज़ें हैं वो सिर्फ उनके लिए हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाते हैं, और दूसरे का वो नहीं समझ पाते, दूसरों के एंगल से वो चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड करते. एक और कॉन्सेप्ट जो पियाजे की थ्योरी में है, दैट इज़ द 3D जो एंगल्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, वो नहीं समझ पाते. इवन ये एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि 2 उन चाइल्ड्स को एक लॉन्ग टॉल ग्लास में, जिनकी हाइट ज़्यादा थी, ग्लास यूज़ किया गया, और एक बाउल यूज़ किया गया जिसका डेप्थ और वो ज़्यादा था, बट उनके सामने वो उस मिल्क को ट्रांसफ़र किया गया फ्रॉम द लॉन्ग साइड ऑफ द ग्लास से उस डेप्थ जो है कि बाउल में, बट स्टिल उनसे पूछा गया कि किस में ज़्यादा है, तो वो ग्लास को प्रेफर कर रहे थे, इवन जबकि उनके सामने वो चीज़ें की गई. फिर भी वो ये नहीं समझ पाते हैं कि बोथ जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें जो अमाउंट है जिस भी चीज़ का वो इक्वल है. ये वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. उनके लिए वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पर्सपेक्टिव वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं, या तो हाइट या वेट या डेप्थ. तो बेसिकली हाइट वो करते हैं स्टार्टिंग की इन द एज ऑफ चाइल्डहुड. तो उनके लिए जो टॉलर है उसमें ज़्यादा अमाउंट है, और जो जिसका डेप्थ ज़्यादा है उसमें लेसर अमाउंट है. ये उनका पर्सपेक्टिव रहता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है. एंड एट द सेम टाइम एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बेसिस पे बताया गया कि ये जो गर्ल है ये आपकी सिस्टर है, या आपकी मम्मा की डॉटर है, या ये स्कूल की स्टूडेंट है. तो वो तीनों एंगल नहीं समझ पाएंगे. गर्ल इज सेम, वो आपकी सिस्टर भी है, वो चाइल्ड की विच इज़ द 4-year-old चाइल्ड, ठीक है. तो वो तीनों को नहीं है, वो तो उनका आंसर ये आएगा कि नो, शी इज़ माई सिस्टर ओनली. तो वो ये नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपकी मदर की डॉटर भी है, ये उस स्कूल की स्टूडेंट भी है. ये चीज़ें वो तीनों एंगल से नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं. दैट्स वाई उनका आंसर ये होता है कि नो, शी इज़ ओनली माई सिस्टर, ठीक है. तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया. एक दो और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके बेसिस पे पाया गया कि वो जो है वो मतलब डिफरेंट एंगल से चीज़ों को नहीं असेस कर पाते, ओनली वन एंगल को प्रेफर करते हैं. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट. This is all about the Jean Piaget's cognitive development theory. There are 4 stages: the sensory motor, then the pre-operational, then the operational, and the concrete operational, formal operational. ठीक है. These are the 4 stages according to ages, and what are the developmental portion or the developmental skills which are developed in a particular stage. This is all about the Jean Piaget theory. Let's start our next stage, which is the childhood. Childhood is a very important stage for human development, for being developed, and which is the longest stage.
नो लॉन्गेस्ट तो नहीं कह सकते, बट इन द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट दिस इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेज. देन द सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज तो मिडिल एज एंड ओल्ड एज होती है, बट द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट जो रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है फ्रॉम द अडल्टहुड, फ्रॉम द प्री नेटल टू अडल्टहुड, जो हमारा डेवलपमेंटल पीरियड बेसिक डेवलपमेंटल पीरियड माना जाता है, उसमें ये चाइल्डहुड जो है ये सबसे लॉन्ग है. दिस इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, द अर्ली चाइल्डहुड एंड द लेटर चाइल्डहुड. ठीक है, चाइल्डहुड में जो डेवलपमेंट होता है इन कंपैरिजन टू इन्फेंसी थोड़ा सा स्लो हो जाता है. इन्फेंसी में जो सीक्वेंस था, फर्स्ट ऑफ ऑल द सिटिंग, देन द क्रोलिंग, देन स्टैंडिंग एंड फिर रनिंग, ये जो सीक्वेंस है ये बहुत तेज़ी से होता है इन अर्ली 2 years. देन द चाइल्डहुड में जो डेवलपमेंट होता है इसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है इन कंपैरिजन टू इन्फेंसी, बट स्टिल द चिल्ड्रंस आर डेवलप इन अ सो मेनी डायरेक्शन, इन अ मोटर एबिलिटीज़, इन अ सेंसरी एबिलिटीज़, in the cognitive development, the moral development also started in a childhood, and the emotional development. ठीक है, all aspects of the development are continuing in the period of the childhood. So let's start. So the child grows slow down during the early childhood as compared to infancy, and the child develops physically, gain height and weight, learn to walk, run, jump, and play with a ball. Socially, the child's world expand from the parents to the family and adults near home and at school. So the child also begin to acquire the concept of good or bad, that is develop a sense of morality. That's mean the morality or the moral stage is starting from the childhood, and during childhood the children have increased physical capacities, can perform tasks independently, can set goals and meet adults expectations, and the increasing maturation of the brain along with opportunities to experience the world contribute to development of the children's cognitive ability. That's mean the child is developed in all aspects of the development, basically in a moral aspect, in a social aspect, cognitive and the emotional aspects. ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही है, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, बट एट द सेम टाइम उनकी मॉरलिटी डेवलप होती है, इमोशन डेवलप होते हैं इन वेरी फास्ट फॉर्म. सो दिस इज ऑल अबाउट दी just introduction about the childhood, and we will continue the childhood from the physical development in a next video. This is all about today. Okay class, thank you so much.